Hello students, the question is regarding self-inductance. Statement A, the self-inductance of the coil depends on its geometry. Statement B, self-inductance does not depend on the permeability of the medium. Statement C, self-induced EMF opposes any change in the current in a circuit. Statement D, self-inductance is electromagnetic analog of mass in mechanics. Statement E, work needs to be done against self-induced EMF in establishing the current. Choose the correct answer from the options given below. Option 1 A, B, C, D only. Option 2 A, C, D, E only. Option 3 A, B, C, E only. And option 4 B, C, D, E only. So the problem is based on the topic electromagnetic induction and in particular some basic concepts regarding self-inductance. So regarding the self-inductance, we know the formula of the self-inductance in terms of the parameters like the number of turns, which is N, then permeability, which is mu naught N square A upon L. If it is a coil, this is the formula, and for the self-inductance of a toroid, the formula is mu naught N square A upon 2 pi R, where R is the radius of the toroid. So from this formula we can easily see that the self-inductance of the coil depends on the geometry, because the number of turns, or we can say that the area or the length or the radius, these are the geometrical parameters. So that's why we can say that the self-inductance depends on its geometry. So this is the correct statement. Now self-inductance does not depend on the permeability of the medium. So this is the wrong statement, because you can easily see from the formula that it depends upon the permeability. Mu naught, this is the permeability. So this is a wrong statement. Now C statement states that self-induced EMF opposes any change in the current in a circuit. Now this is basically the Lenz's law. According to this, the self-induced EMF opposes the change in the current in a circuit. So this is a true statement. Now self-inductance is electromagnetic analog of mass in mechanics. Analog means it is similar in nature to the mass in mechanics. Now this is a correct statement, because mass is a kind of inertia. Mass is basically inertia, and inertia always opposes the change in position, or we can say that it opposes the motion. Now the self-inductance basically it opposes the change in current. So that's why this is the electrical, or we can say that the electromagnetic analog of mass in mechanics. So this is the correct statement. Now each statement is work needs to be done against self-induced EMF in establishing the current. So we are establishing some current, we are basically generating some energy. So that's why work has to be done because of the principle of conservation of energy. So the work needs to be done. This is the correct statement. So E statement is also correct. So from this we can say that A, C, D, E, these are the correct statements. So option 2 is correct option here. यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस के रिगार्डिंग एक जो है प्रॉब्लम दी गई है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें उन्हें चेक करना है कि उनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है सेल्फ इंडक्टेंस किसी कॉइल की उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें, अगर हम किसी कॉइल की बात कर रहे हैं तो उस केस में म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल फार्मूला हम यूज़ करते हैं, और अगर हम टोरॉइड लाइक किसी एक डिवाइस की बात करते हैं तो उसमें उसकी सेल्फ इंडक्टेंस होती है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ पे दोनों ही केसेस में हम देख सकते हैं इजीली कि एरिया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ एल दिख रहा है, यहाँ एरिया और यहाँ आर यानी रेडियस दिख रही है। तो ये बेसिकली एक ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स हैं किसी भी पर्टिकुलर कॉइल के लिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस जो है ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा कहा गया है कि सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि हम साफ साफ देख सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले में म्यू नॉट जो है वो आता है, तो इसलिए ये डिपेंड करता है, तो एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करता है कोई भी चेंज इन करंट में सर्किट में, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, लेंस लॉ इसी पे बेस्ड है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेल्फ इंडक्टेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग है मास का, जैसे मैकेनिक्स में, यानी कि सिमिलर नेचर शो करता है।
जैसे कि मास शो करता है मैकेनिक्स में। मास का बेसिक रोल, इनर्शिया का जो बेसिक रोल है वो ये है मोशन को रेस्ट्रिक्ट करना, मोशन को रोकना, मोशन को अपोज करना बेसिकली। तो यहाँ पे वही अपोजिशन जो है करंट के लिए दिखाई देता है इन द केस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस एक तरह से करंट के चेंज को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करती है, अपोज करती है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। वर्क नीड्स टू बी डन, वर्क जो है किया जाना चाहिए अगेंस्ट द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एस्टेब्लिशिंग द करंट। अगर करंट एस्टेब्लिश करने एक तरह से हम जो है एनर्जी जो है उसको जनरेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से वो एनर्जी हमें चाहिए होगी, और वो एनर्जी हमें वर्क डन करने से मिलती है। वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये वर्क किया जाएगा अगेंस्ट द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ए सी डी ई जो है करेक्ट स्टेटमेंट है हमारे यहाँ पे। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।